हेलो फ्रेंड्स, जानू तो किचन हाउस में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावशुं एकदम सरस मजानी नवी रेसिपी है। अने हजू सुधी जो तमे मारी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो मारी चेनल खूब झड़पथी पहेला सब्सक्राइब करजो, लाइक करजो, शेर करजो, जेथी आवनारा नवा विडियो तमारा सुधी तुरंत पहोंची शके। तो चालो जोई लईए आपणे फटाफट रेसिपी। सौप्रथम आपणे एक बाउल लेवानुं छे, तेमां मैं 1 कप जेटला बासमती चोखा छे ते लीधेला छे। હવે તેને આપણે 2 થી 3 પાણીએ સરસ રીતે ધોઈ લેવાના છે। હવે તેનું પાણી આપણે કાઢી નાખવાનું છે। પાણી મેં કાઢી નાખી લેવું છે। હવે તેને આપણે થોડું પાણી નાખીને પલાળવાના છે। 15 થી 20 મિનિટ માટે તેને આપણે પલાળી રાખવાના છે। હવે ઢાંકીને આપણે તેને પલાળી રાખશું। 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ચેક કરી લઈ। दाणो सरस रीते फूलाई गयो छे। हवे तेने आ रीतना गळणीमां आपणे गाળી लेशुं अने पाणी वधारानुं बधुं आपणे काढी नाखवानुं छे। एकदम चोखाने कोरा करी लेवाना छे। हवे एक प्रेशर कुकर मूकशुं, तेमां आपणे 2 चमची जेटલું घी एड करवानुं छे। घी आवी जाय એટલે આપણે તેમાં तज, लविंग अने तीखा लीधेला छे ते आपणे अत्यारे एड करवाना छे। एक नानी वाटकी बदाम लीधेली छे ते आपणे एड करी दई। एक नानी वाटकी जेटला काजूना टुकड़ा छे ते पण आपणे एड करवाना छे। एक नानी वाटकी किसमिस लीधेली छे ते पण आपणे एड करी दई। तमारी पासे कोई पण ड्राय फ्रूट होय ते आमां लई शको छो। હવે ઘીમાં સરસ રીતે આપણે સાતડી લેશું। હવે તેમાં આપણે ચોખા હતા તે આપણે એડ કરી દેવાના છે। પાણી બધું નીકળી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે 1 મિનિટ માટે આપણે તેને સરસ રીતે સાતડવાના છે અને હળવા હાથે આપણે હલાવવાના છે। દાણો ભાંગે નહીં તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। एक मिनिट थई गई है, तमे जोई सको छो सरस रीते संतळाई गया है। हवे तेमां आपणे अर्धा कप जेटली खांड एड करवानी छे। गळास तमे वधघट करी सको छो अने 1 થી 1.5 कप जेटલું आपणे पाणी एड करवानुं छे। अत्यारे हूँ 1.5 कप जेटલું पाणी एड करी रही छूं એટલે एकदम सरस मजानो छूटो दाणो तैयार थशे। हाँ, तमने मारो विडियो अने मारी रेसिपी केवी लागे छे ते कॉमेंट बॉक्स में जरूरथी जणावजो। अहींया आपणे 5 चमची जेटला एलचीना दाणा एड करवाना छे अने केसरना तातणा छे ते पण आपणे एड करी दई। अहींया मैं ऑरेंज फूड कलर लीधेलो छे ते पण आपणे एड करवानो छे, तेनाथी कलर सरस आवशे। ऑप्शनल छे, जो तमारे एड करवो होय तो ज करजो, नहीतर केसर पण चाले। हवे सरस रीते आपणे मिक्स करी देशुं। हवे ढांकण ढांकीने आपणे मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आपणे करवानी छे। હવે આપણે ચેક કરી લઈ। કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મજાનો છૂટો દાણો થયો છે ને એકદમ કેસરિયા ભાત સરસ મજાના તૈયાર થઈ ગયા છે। છે ને સરસ મજાની રેસીપી। હવે તેને ગરમા ગરમ આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં જ લઈ લેશું કેસરિયા ભાતને। ज खावानुं मन थई जशे। तो केवी लागी आजनी मारी आ रेसिपी? तमे जरूरथी लाइक, शेर और सब्सक्राइब करजो अने मने कॉमेंट पण करजो। फरी मळीशुं अवनवी रेसिपी साथे। त्यां सुधी आवजो।